Hi, welcome to Vamsi's Golden Series. This is very easy exam, but if you can believe, you can start. But the day you understand why it is easy, you can achieve. This is the summary of space technology at Vamsi speed. I have divided technology into space, defense, nanotechnology and earth sciences, energy, computer, mobile communication, info, etc., health and biotechnology. So space technology का summary है ये. So I am dividing this into basic terms: orbit, satellites, launch vehicles, ISRO, space missions, ISS, and current updates. First, basic terms. ये कोई काम का नहीं है. Satellite means something which is intentionally placed into orbit. That's why you can call it as artificial satellite also, to differentiate it from natural satellites. Spacecraft, anything which can fly in outer space. Space shuttle, which can do repeated journeys. Launch vehicle, something which carry the main payload to the orbit. Rocket and jet, it is important. Rocket carry both fuel and oxidizer. Jet carry only fuel. It depends on atmosphere for oxygen. Payload, this is the carrying capacity or the main equipment of the launch vehicle. Orbit क्या होता है? Satellites move in a path around the earth, that is called orbit. So every satellite must have an orbital path. If it won't have, because of gravitational force, it fall down. So you must give certain speed to satellite called orbital velocity. Then the attraction of earth will convert that speed into acceleration. So it generates centrifugal force which will be balanced by the gravitational force. That's why if a man is moving in a satellite around the earth, he will have mass, but he will not have weight because he will not have gravity. So there are different types of orbits. Low earth orbit generally also called as polar orbit, which with less height. यहाँ satellite pole to pole घूमता है. Because of that, since it is less height, it can observe the satellite can observe the earth carefully with a better with perfection. But it is not available 24/7 because by the time it turns again, the earth underneath rotates. So there will be a drift. So इसमें भी एक और टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. दैट मींस व्हेनेवर एंड वेरेवर द सैटेलाइट क्रॉसेस द इक्वेटर, द लोकल सोलर टाइम ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज सेम एट दैट पॉइंट. Then high earth orbit at the height of 36,000 km, satellites will have that kind of speed that will match the orbital period of earth. So at that height, satellite also take 24 hours to make one orbit. So it is synchronous to a place. That's why it is called geosynchronous. Out of this, there is one special category called geostationary. The satellite in this orbit will be exactly above the equator and in circular orbit. This is important. Then medium earth orbit. There are two types in this: semi-synchronous and Molniya. Semi-synchronous means it is almost circular orbit at a height of 20,200 km. At this height, the satellite takes 12 hours to complete one orbit, and generally global positioning systems में इसको use करता है. And Molniya orbit is highly elliptical. It also takes 12 hours to complete an orbit, but when the satellite comes onto the side which it has to observe, then it will go extremely elliptical. So it will take more time on that side, and when it go other side, it will quickly rotate and come back. So generally Russia का concept है ये, but not very important to you. Then satellites, remote sensing satellites are used for earth observation. They are not available 24/7 because they are launched in low earth orbits. So इसमें two types है: active and passive remote sensing. Active remote sensing means they can work at night also. Passive remote sensing work only at daytime. Communication satellites, they are launched at 36,000 kilometers. They are used for communication. They are 24/7 available. Applications की बात करें, remote sensing satellites are used in applications where time is not bounded, but there is no time bound, but we require close observation, like earth observation satellites disaster management में use करता है. Communication satellites are used in those applications which are time bound, like communications, navigation, climate and environment, etc. What are fuels used in launch vehicles? Solid fuel is nothing but aluminum powder binded by HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. मगअप करने का कोई जरूरत नहीं. Highly stable है, less corrosion, so it is preferred in missiles. But direction of vehicle cannot be controlled because direction will be controlled using on-off mechanism. Solid propellant once burn होता है, उसको off नहीं कर पाएंगे. Fuel, liquid fuel, so it is nothing but UDMH, means unsymmetrical dimethyl hydrogen. So direction of vehicle can be controlled, but it is highly corrosive.
Cryogenic technology using application of temperatures less than minus 150 degrees centigrade. So they have applications not only in rocket fuels but also in MRI, magnetic levitation, and surgery, cryosurgery बोलता है. So cryogenic engines in rockets use liquid hydrogen at minus 253 degrees centigrade as fuel and liquid oxygen at minus 183 degrees centigrade as oxidizer. Applications: high thrust ज्यादा है. Thrust is nothing but mileage ऐसा. It can carry payloads even greater than 2000 kg. That's why it is used in GSLV. सो लॉन्च व्हीकल की बात करें, साउंडिंग रॉकेट्स, दे जनरली 1 or 2 स्टेज होता है. सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है, यूज्ड फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजन्स एंड फॉर स्पेस रिसर्च. जनरली 10-20 किलोमीटर जाके एटमॉस्फेयर को रिसर्च करता है. अर्ली रॉकेट M100 है, रशिया से हम लेते थे. देन सेंटर फ्रॉम फ्रांस. देन फर्स्ट लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट वाज इन 1963 फ्रॉम तुम्बा. देन प्रेजेंट रोहिणी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स इसरो, नॉट सैटेलाइट्स, रोहिणी सीरीज ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स हम यूज करता है इसरो. ये SLV एंड SLV 4 स्टेज है, सारे सॉलिड है. फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च वाज इन 1980 एंड इट कैन कैरी अप टू 40 kg पेलोड्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट. ये SLV 5 स्टेज है, ऑल सॉलिड, अप टू 150 kg ऑफ पेलोड्स इट कैन कैरी टू 400 किलोमीटर. बोथ वर रिटायर्ड. नाउ वी आर नॉट यूजिंग SLV एंड ASLV. Then PSLV, very important. PSLV 4 stage है, solid liquid. It can carry up to 1600 kg payloads into sun synchronous orbit, 1050 kg payload into geotransfer orbit. And it can, of course, it can increase also to a little by using different variants like PSLV XL, PSLV HP. These are extra using boosters. It can carry up to 2000 kg of payload also, but it has never carried. Generally 1600 is the highest that PSLV में जाता है. GSLV ये 3 स्टेजेस होता है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक. देन इसका 3 फेजेस में डेवलप्ड है. मार्क 1 विच वी हैव टेकन, वी हैव परचेज्ड फ्रॉम रशिया. इट कैन कैरी अप टू 2000 kg. मार्क 2 इंडिया इंडिजिनसली डेवलप किया है. इट कैन कैरी अप टू 2500. टिल नाउ 2 recently if you see, one is inside 3DR and now just 3 days back we have sent South Asia satellite. So GSLV MK3 इंडिया 4500 kg तक लेके जा सकता है. इट इज इन डेवलपिंग फेज. टेस्ट हुआ है सक्सेसफुली, अभी लॉन्च करना है. RLV, reusable launch vehicle, 2 stage to orbit. So 2 stage to orbit, one is semi cryogenic, second is cryogenic stage. Recently successfully test किया है हमने. So RLV Avatar. So ये single stage to orbit है. It is being developed by ISRO and DRDO together. Rocket launching stations in India. We have Balasore in Odisha. Similarly, we have Abdul Kalam Island. इसको Wheeler Island था. Now after the death of Kalam ji, we named it Abdul Kalam Island. It is in Odisha. यहाँ generally missiles test करता है. And Satish Dhawan Space Center, Sriharkota, Andhra Pradesh. This is the main space launching station. And we have Vikram Sarabhai Space Center in Tumba, Thiruvananthapuram, Kerala. World में बात करेंगे तो we have Vandenberg in California, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में. सिमिलरली केप कैनावरल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में, फ्लोरिडा में. देन वी हैव कौरव फ्रेंच गयाना में. देन वी हैव प्रीस्टेक इन रशिया एंड वी हैव बाइकनोर इन कजाकिस्तान. सिमिलरली वी हैव जिकॉन एंड जिजांग इन चाइना एंड वी हैव तनिगाशिमा इन जापान एंड श्रीहरिकोटा इन इंडिया. दीज आर इंपॉर्टेंट फेमस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस इन द वर्ल्ड. देन इसरो की बात करें, इसरो एक्चुअली वाज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विच वाज डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर. स्पेस कमीशन विल लुक आफ्टर दिस. एंड माइलस्टोन्स की बात करें, 1962 में इनकोस्पार फॉर्म हुआ है. टल्स वाज स्टार्टेड एंड 1963 टल्स मींस तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन. ये सारे अभी इतना माइंड में रखें. 1963 फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम टल्स, तुम्बा से. 1969 में इसरो वाज फॉर्मड. 1972 स्पेस कमीशन एंड DOS वाज सेटअप एंड इसरो वाज ब्रॉट अंडर DOS. एंड 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च किया है. 1980 में फर्स्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3 वाज लॉन्च. 1979 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था बट 1980 में फर्स्ट लॉन्च रहा है. एंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें, आईसैक इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स. SSC अहमदाबाद, इट इज रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन त्रिवेंद्रम, रिस्पांसिबल फॉर लॉन्च व्हीकल डिजाइन. SDSC श्री सतीश धावन श्रीहरिकोटा, सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन है. IPRC प्रोपल्शन के लिए है, ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है. NRSC वे IRS डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, ये हैदराबाद में है. एंड अंतरिक्ष इज फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस. स्पेस मिशन की बात करेंगे, पहले मार्स की बात करेंगे. मार्स पे गया है हमारा मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन. इंडिया ने लॉन्च किया है. PSLV C-25 carried it, launched in 2013 but reached there in 2014. India is the first country to launch successfully in maiden attempt and fourth space agency to reach Mars.
रशिया का रास्कोमास, यूएसए का नासा, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन इंडिया का इसरो। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2014 मिला है इसरो को, एंड स्पेस पायनियर अवार्ड 2015 में मिला है फॉर दिस सक्सेस। देन ट्रेस गैस ऑर्बिटर रास्कोमास एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर कर रहा है। शियापरेली द नेम ऑफ द प्रोब एंड इट रीच्ड इन अक्टूबर 2016। इट इज टू स्टडी ट्रेस गैस ऑन मार्स। मून की बात करेंगे, चंद्रयान-1 इंडिया ने लॉन्च किया है 2008 में। PSLV C11 कैरिड इट। इट वाज प्लान्ड फॉर 2 years बट वर्कड देयर, इट वाज देयर फॉर 312 days, देन कम्युनिकेशन वाज लॉस्ट। मीनवाइल इट हैज टेकन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून एंड 70,000 क्वालिटी इमेजेस को भेजा है। देन चंद्रयान-2 इज प्लान्ड ऑर्बिटर लैंडर रोवर, 3 थिंग्स होंगे इसमें, ऑल बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इट विल बी लॉन्च्ड इनटू 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर लूनर सर्कुलर ऑर्बिट। और कोई स्पेस मिशन मून पे रिसेंट नहीं है, सो इतना बहुत है आपके लिए। देन जुपिटर एंड वीनस की बात करें, जूनो रिसेंटली नासा का जुपिटर पे गया है, 2011 में लॉन्च किया है, 2016 में पहुंच गया है। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है जूनो द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच जुपिटर, गलत है, गैलीलियो ऑलरेडी जा चुका है। देन वीनस की बात करें, आकाशुकी, ये 2010 में लॉन्च किया है बट पहुंच गया 2015 में, ये जापान का है। डोंट रिमेंबर 2010 में लॉन्च किया 15 में पहुंच गया, कहीं नहीं पूछने वाला। इतना पूछने वाला आकाशुकी क्या है, आंसर है स्पेसक्राफ्ट। और आकाशुकी कौन सी रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया है, बस किस कंट्री का है इतना पूछ सकता है, नथिंग मोर टू गो, बिकॉज आपका नहीं है ये सारे। देन एस्ट्रॉइड्स की बात करें, देन डान नासा ने लॉन्च किया है, पहले वेस्टा पे गया है 2011 में, 1 साल वहां रख के फिर वहां से निकल के देन सेरेस पे गया है। वेस्टा एंड सेरेस क्या है, एस्ट्रॉइड्स। देन हाइबुजा 2 जैक्सा ने लॉन्च किया है रियूगुला एस्ट्रॉइड पे, 11 पे लॉन्च किया है, इट्स स्टिल एन रूट, इट विल रीच इन 18, सो याद रखें हाइबुजा 2 जैक्सा एस्ट्रॉइड पे जा रहा है, 18 में पहुंच जाएगी। उसिरिस रेक्स क्या है, रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया है, कहां पे लॉन्च किया है, वे एस्ट्रॉइड बेन्नू पे लॉन्च किया है। इट इज ए सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च्ड इन 2016, इट विल रिटर्न इन 2023। कोमेट्स पे रोसेट्टा फिले, ये यूरोप ने लॉन्च किया है, कहां लॉन्च किया है, एक कोमेट पे लॉन्च किया है, उसका नाम है चुरियोमोव, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, बट ये याद रखिए ये 2014 में पहुंच गया है। रोसेट्टा क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है, कहां पे गया है, कोमेट पे गया है, काम खत्म। देन आउटर सोलर सिस्टम की बात करें, वी हैव कैशनी हाइगन्स, नासा यूरोप मिलके गया है, ये भी नहीं पूछेगा कौन कौन मिलके लॉन्च किया है, इतना भी आपको जरूरत नहीं। कैशनी हाइगन्स एक स्पेसक्राफ्ट है, ये पहले वीनस पे गया है, बाद में जुपिटर पे गया है, प्रेजेंटली इट इज एट सैटर्न, काम खत्म। न्यू हॉरिजन्स क्या है, नासा ने लॉन्च किया है, रीच्ड चरण, चरण क्या है, प्लूटो का मून, देन वहां से निकल के इट इज स्टडीइंग कूपर बेल्ट नाउ। कूपर बेल्ट क्या है, प्लूटो के आसपास जो भी छोटे मोटे है ये सारे कूपर बेल्ट बोलता है, वहां स्टडी कर रहा है। वे डिटेल में यूनिवर्स टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी भूल जाइए। वोयेजर 1 क्या है, नासा का लॉन्च किया है, इट इज इनफैक्ट द फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट till now. It has left our solar system and it is into interstellar space. Similarly, Voyager 2 also launched by NASA, but it is also for the same purpose, but it is still to leave the solar system. It will leave after some time. Okay. नेक्स्ट रिसेंटली एंडेड मिशंस की बात करें, मैसेंजर नासा का है, मर्क्यूरी पे घूम रहा था बट 2015 में खत्म हो गया मिशन। सिमिलरली वीनस एक्सप्रेस यूरोप का है, वीनस पे है, इट वाज आल्सो एंडेड इन 2014। सो मैसेंजर एंड वीनस एक्सप्रेस आर आल्सो स्पेस मिशंस व्हिच वर एंडेड रिसेंटली। ISS की बात करें, व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज ए लार्ज स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ए होम वेयर एस्ट्रोनॉट्स लिव एंड डू सम रिसर्च। देन वेयर इज इट इज एट ए हाइट ऑफ 360 किलोमीटर, नो नीड टू एग्जैक्टली मगअप, बट इतना याद रखें 36,000 किलोमीटर हाइट पे तो नहीं है, सो 360 किलोमीटर पे है अबव द अर्थ। एंड हाउ ओल्ड इज इट, फर्स्ट पीस वाज लॉन्च्ड बाय रशिया इन 1998 एंड फर्स्ट क्रू अराइव्ड इन 2000। So which countries are involved? Main countries are Canada, Japan, Russia, United States, and 11 members of European Space Agency. No need to know what are those 11 members. European Space Agency का 11 countries plus Canada, Japan, Russia, USA. काम खत्म। करंट अपडेट्स की बात करें, पहले इसरो का सैटेलाइट्स देखेंगे, देन इसरो का लॉन्च व्हीकल्स देखेंगे, देन इसरो का अदर प्रोग्राम्स देखेंगे, देन वर्ल्ड में क्या हो रहा है देखेंगे, देन मिसलेनियस देखेंगे। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद इसरो सैटेलाइट्स। इसमें क्या याद रखना है आपको, IRNSS नाविक याद रखना है, गगन याद रखना है, एस्ट्रोसैट याद रखना है, रिसोर्सैट 2 याद रखना है, जीसैट 18 याद रखना है एंड इनसैट 3DR याद रखना है। ये सारे करंट अपडेट्स आई एम डूइंग टिल द एंड ऑफ अप्रैल। मई का जो करंट अपडेट्स मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा बाद में। पहले रिसेंट सैटेलाइट्स की बात करते हैं, IRNSS और नाविक। इस पे इट इज ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, 3 आर इन जियोस्टेशनरी, 4 आर इन जियोसिंक्रोनस। इट प्रोवाइड 2 kinds of services, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, एंड इंडिया इज द 5th कंट्री टू हैव इट्स ओन नेविगेशन। यूएसए का नवस्टार GPS, रशिया का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, चाइना का बीडो और कंपास, ये नेम भी याद रखना आपको, एंड इंडिया का IRNSS और नाविक।
Gagan. It is a constellation of 3 satellites jointly developed by ISRO and Airport Authority of India because it is helpful for airlines and 10 times more precise compared to GPS and radio navigation aids used for precision landing. Before landing ko GPS ko use karte hain, now using this it is more precise. So India is the 4th nation in the world to have interoperable satellite based augmentation system. After USA, Europe and Japan, India is the 4th country to have it, and in the equatorial region India is the first country to have it. एस्ट्रोसैट एस्ट्रोसैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज PSLV C30 ने कैरी किया है इसको एंड ये सारे वेट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं बिकॉज एस्ट्रोसैट वाज लॉन्च्ड इन 2015 2 साल हो गया अभी कोई काम करें आपको इट हैज 750 kg इसके साथ 6 अदर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया गया है एंड फर्स्ट यूएस कमर्शियल सैटेलाइट भी लॉन्च किया है इसके साथ एंड टोटल पेलोड वाज 1631 kg ऑब्वियसली हमारा PSLV लॉन्च किया तो दिस इज द मैक्सिमम 1631 एंड आउट ऑफ दैट एस्ट्रोसैट इज ओनली हाफ ऑफ दैट अप्रोक्सीमेटली बट दिस इज ऑल नॉट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज द इंडियाज फर्स्ट dedicated satellite for astronomy research and India is the 5th country after US, Japan, Russia and Europe to have its own dedicated satellite for astronomy research. USA, Japan, Russia and Europe. Bas. Then ResourceSat 2A, it was launched in 2016, launched by PSLV C36. इसका weight है 1235 kg and it was launched into 817 km SSO. Don't mug up this. 817, 717, 917 ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा. बट इतना समझ लीजिए वे लोअर ऑर्बिट में. Obviously ResourceSat means वे रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑब्वियसली कैनॉट गो इनटू जो स्टेशनरी राइट इतना तो आप समझ सकते हैं ऐसा आपको समझना है देन इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस लाइक क्रॉप एरिया एंड क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेशन एक्सेट्रा एंड GSAT 18 इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड इसका वेट है 3404 kg सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लॉन्च इट बिकॉज स्टिल GSLV Mark 3 is in testing phase so that's why we launched it from Kauro Aerian launch vehicle carried it and INSAT 3DR it is an advanced weather meteorological satellite you know INSAT समझ करके मत सोचना it cannot be launched by India, so it was launched by Aerian. No, it is our launch vehicle carried it. GSLV F05, GSLV Mark 2, 2241 kg. So 2000 to 2500. Recently, only 2 satellites are carried by our GSLV, whose weight is between 2000 and 2500. One is INSAT 3DR, which I have done now, and other is South Asia satellite, which was done just 2-3 days back, which I will do in the May updates. Okay. Then we have so current updates ISRO satellites हो गया now we see ISRO launch vehicles important are PSLV C37 PSLV C35 PSLV C34 scramjet and RLV-TD PSLV C36 is not important because ResourceSat 2A was carried there is no specialty in that launch vehicle that's why I missed it PSLV C37 so it has made world record of carrying 104 satellites in single flight total payload was 1378 kg and main satellite of all these is Cartosat 2 series almost half of the weight is that so it was launched into 505 km SSO sun synchronous orbit no need to mug up but याद रखिए लो अर्थ ऑर्बिट में गया है and Cartosat 2 series satellite main है and जिसका 700 kg है approximately and totally in 1300s and 3 Indian satellites है along with Cartosat 2 more Indian satellites है and majority of satellites are from USA and 5 other countries no need to remember which countries are those PSLV C35 8 satellites into 2 different orbits though the number is less but they are into 2 different orbits one main satellite was SCATSat 1 which was a weather satellite taken into 720 km polar sun synchronous orbit जिसका weight है 371 kg and other satellites were taken into 670 km polar orbit no need to mug up but याद रखिए they are taken into 2 different orbits PSLV C35 then PSLV C34 launched 20 satellites in a single flight total payload was 1288 kg now it is not very important because now 104 is more better record and recent so main satellite was again Cartosat 2 series 700s में है rest are all together so Cartosat क्या होता है Cartosat is all cartographic applications urban and rural area applications and coastal line use and उसका सारे रिसर्च उसको मेजर करेगी so scramjet क्या है no oxidizer है इसमें that's why it is called air breathing so it uses hydrogen as fuel and oxygen from atmosphere as oxidizer so made in short duration experimental test recently हमने successfully किया है hypersonic flight at Mach 6 किया है वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है so it is a 2-stage spin stabilizer launcher with identical solid motors based on रोहिणी RH560 साउंडिंग रॉकेट से बनाया है बट कोई काम नहीं आपको इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट इंडिया इज द फोर्थ नेशन आफ्टर USA, Russia and European Space Agency to do this
देन आरएलवी रीयूजेबल की बात करें, द HS9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर कैरिड आरएलवी टीडी, कोई काम करना है आपको। TSTO ये याद रखिए, 2 stage to orbit, 1 stage will go and it will land like an aeroplane again, and from there it will be launched and it will go and place the satellite into orbit, and with the help of balloons it will fall down again. Both will be recovered and both were successfully recovered. So this is sufficient for you. Then we have seen satellites, launch vehicles. Now we see ISRO other programs. There are two things to note here. One is Aditya L1, second is NISAR. What is Aditya L1? Aditya L1 एक सन को ऑब्जर्व करने का मिशन है. It has not yet launched. It is planned in 2020. It will be launched in Lagrange's point 1. So 5 Lagrange's points are identified. L1 is at 1.5 million kilometer from Earth, between Earth and Sun. And Lagrange point क्या होता है? वहाँ net gravitational force of small object will be 0. It will be balanced by 2 large objects, maybe Earth and Sun. So satellite can be parked there. No need to orbit. It can continuously observe the Sun or anything. So it is a first mission to study the sun. इसमें 6 payloads होता है, but आपको कोई काम का नहीं. Then we have seen NISAR. NISAR means NASA ISRO synthetic aperture radar. ISRO NASA मिलके लॉन्च कर रहा है. It is also planned in 2020. First radar imaging satellite to use dual frequency. ये क्या होता है डिटेल में आपको समझने का जरूरत नहीं है. Understand natural process of Earth. That's why it is launching. What is NISAR? It is a kind of satellite which are planned between NASA and ISRO. काम खत्म. Then we have seen satellites, launch vehicles, other programs. Now we see what is going in the world. First we understand what is going in China, then Japan, then Europe, and then USA. World की बात करें, China. Quantum experiments at space scale. That means space satellite, which is a hack-proof communication between space and ground. It is the world's first quantum satellite launched by China. And Tiangong-2, it is a space station of China. It went at 380 km above Earth. 2 astronauts spent 1 month in October 2016 there. And Pulsar test satellite. It detects the signs of pulsars. Pulsars means these are high-density stars formed by neutrons. So उसको टेस्ट करेगा. TANSAT, also called CarbonSat, ये भी चाइनीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, डेडिकेटेड टू मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ's atmosphere. China is the third country after Japan and US to launch a satellite to monitor greenhouse gases. Then हम जापान की बात करें, जापान ने खिरमेकी 2 को लॉन्च किया है. It is their first military communication satellite. And USA की बात करें, मिशन लूसी. मिशन लूसी is to explore Jupiter Trojans. It will be launched in 2021. It is not yet launched. Similarly, Europa Clipper, it is also not yet launched. It will be launched in 2020s. It will go to Europa. Europa is the moon of Jupiter. So the new frontier program, there are 3 things till now. New Horizons, which is at Pluto now and Kuiper belt को study कर रहा है. Juno, which went to Jupiter, and Osiris Rex, which went to Bennu, which is a sample return mission. These 3 are considered under new frontier program of NASA. Then Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA, ये US and German मिलके बनाया है. वे infrared rays को study करेगी, but it is not very important. Similarly, Cyclone Global Navigation Satellite System, CGNSS, वे USA launch किया है to study the cyclones and hurricanes, but not important. Similarly, Psyche, ये Psyche क्या है? It will go into metallic asteroid Psyche. 16 Psyche is the name of an asteroid which is all metal से बना है. वहां जाएगी, वहां स्टडी करने के लिए, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट आर, उसको पहले GOES आर बोलता है. नाउ इट इज नोन एज GOES 16. इट इज ए न्यू काइंड ऑफ सैटेलाइट, ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट बट लॉन्च्ड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, व्हिच USA हैज डन, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें, लीजा पाथ फाइंडर, ये क्या है? एक्चुअली यूरोप इज प्लानिंग टू लॉन्च लीजा मींस एवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना. ये क्या है अभी आप भूल जाइए. सो इट इज टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, बस इतना वर्ड माइंड में रखिए, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है. इट इज प्लान टू बी लॉन्च्ड इन 2034. टू स्टडी द टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर दैट लीजा, दे लॉन्च्ड लीजा पाथ फाइंडर. दिस इज सफिशिएंट. So we have seen satellites, launch vehicles, other programs of ISRO. These 3 are more important. World is not important to us. Just world में नाम तक सुनना आपका काम है. No need to see detail में क्या है ये, हमको क्या लेना देना है. And miscellaneous की बात करते हैं अभी. Miscellaneous में telescopes and observatories की बात करेंगे, then others की बात करेंगे. अगर मैं टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज की बात करूं, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है. इट इज ए 3.6 मीटर टेलीस्कोप, बट नो नीड टू रिमेंबर दिस. इट इज बिल्ट बाय आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस एरिस and along with the Belgian firm. So located at Devastal Observatory site near Nainital. So ये इंडिया का है and it is the largest reflecting telescope in Asia.
ऑप्टिक्स वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद बेल्जियन फर्म. सो जस्ट देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक ऑब्जर्वेटरी है, इंडिया में है, काम खत्म. ग्रेप्स 3 क्या है, ये भी एक ऑब्जर्वेटरी है, ऊटी में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड जापानीज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया है. एंड इट इज टू स्टडी कॉस्मिक रेस and it has म्यून डिटेक्टर also. म्यून का मतलब म्यून्स आर also like particles like electrons, उसको स्टडी करता है ये. जेम्स वेब क्या है, ये एक टेलीस्कोप है एंड इसको स्टिल लॉन्च करना है. इट इज प्लान्ड इन 2018. जस्ट इतना याद रखे, जेम्स वेब इज ए स्पेस टेलीस्कोप, काम खत्म. देन ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज, 4 टेलीस्कोप्स को मिला के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज बोलता है नासा. ये सारे चारों नासा का टेलीस्कोप्स है. एक है हबल टेलीस्कोप, इट ऑब्जर्व्स विजिबल लाइट, बट हमको कोई लेना देना नहीं. डोंट वेस्ट योर टाइम रिमेंबरिंग वेदर विजिबल लाइट और सम अदर लाइट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. बट नाम याद रखिए, हबल इज ए टेलीस्कोप. चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, चंद्रा नाम देख के आपको लगता है ये इंडिया का है, चाहे चंद्रा तो इंडियन है, बट ऑन हिज नाम को आइडेंटिफाई करने के हु वाज वर्किंग विथ नासा. सो यूएसए ने लॉन्च किया है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, वे एक्सरेस को ऑब्जर्व करता है. कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, वे गामा रेस को ऑब्जर्व करता है. स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ये भी नासा का है, इंफ्रारेड रेस को ऑब्जर्व करता है. ये चारों को मिलकर बोलता है ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज ऑफ नासा. देन फास्ट 500 एपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, ये एक निकनेम है थियानयान. सो ये चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है. इफ यू सी द फील्ड 500 मीटर डायमीटर मींस बहुत ज्यादा है. सो लार्जेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड. सो ऐसा लार्जेस्ट फील्ड टेलीस्कोप्स की बात करें, एपर्चर की बात करें तो ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. एंड सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश एपर्चर इन द वर्ल्ड, रतन 600 ऑफ रशिया, 576 मीटर डायमीटर, विच इज द लार्जेस्ट बट विच वाज नॉट फील्ड. फील्ड में ये लार्जेस्ट है तियानयान. मिसलेनियस में अदर्स की बात करें, टीम इंडस क्या है, एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है. इट इज प्लानिंग टू सेंड ए स्पेसक्राफ्ट टू मून ऑन December 28, 2017. इट हैज जस्ट अनाउंस्ड अबाउट एन इसरो रॉकेट. एंड क्यूबसैट्स क्या है, स्मॉल इनएक्सपेंसिव स्पेसक्राफ्ट्स बिल्ट इन जनरली 4 to 5 इंच क्यूब्ड यूनिट्स. कैशफॉल क्या है, एक फ्लेम प्रूफ कोटिंग है, इसरो ने रिसेंटली डेवलप किया है. वे कोई ऑटोमोबाइल्स में सीट कवर्स पे वगैरह यूज कर सकता है. सो जब फायर टाइम पे वे बर्न नहीं होगा. यू आर राव क्या है, ही वाज former chairman ISRO and secretary of Department of Space. He was well known, very popular, and he has contributed so much to ISRO. He got 2016 IAF Hall of Fame by International Astronomical Federation. Not very important. Then टाइटेनियम स्पंज प्लांट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हमने खुद टाइटेनियम स्पंज प्लांट को एस्टेब्लिश किया है कोल्लम में इन केरला. सो इट हैज एप्लीकेशंस इन स्पेस एंड डिफेंस. सो पहले हम इंपोर्ट करता था, अब इंपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारा खुद का है. देन स्पेस एंड क्लाइमेट. सो रिसेंटली इसरो की लीडरशिप में अलॉन्ग विथ फ्रेंच का CNES का लीडरशिप में हम सारे 60 कंट्रीज का स्पेस एजेंसीज को न्यू दिल्ली बुलाया है. इन दैट मीटिंग दे हैव डिसाइडेड टू कोऑर्डिनेट देयर डेटा ऑफ ऑल देयर सैटेलाइट्स टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस. ये कोई काम का नहीं. और बात करेंगे, स्पेसएक्स एक यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है एंड इट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल सेंड स्पेसक्राफ्ट टू ISS. China has launched its first fully owned overseas satellite ground station in near North Pole in Sweden. ये डेटा डाउनलोडिंग डबल स्पीड से होता है एंड इनफैक्ट इट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दोज सोर्सेस. सो बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस नॉनसेंस. China has recently launched its first dark sky reserve near India-Nepal border, but we are not interested. Why dark sky reserve? Dark sky reserve का मतलब there will be no artificial light, so that you can carefully observe the space and all. Astronomical applications के लिए, observations के लिए बनाता है, but इस एक कोई खास का point नहीं है. So this is all about space summary. Thank you for watching.